Class 12 Physics, second chapter, Current Electricity. Now, basic concepts and formulas. In this chapter, you will study some basic concepts and formulas, mainly to solve numerical purpose. Okay, so some formula and some basic concept try to understand. First, electric current. I is equal to Q by T. Electric current is the flow of charge through a conductor in unit time. The rate of flow of charge through any cross section area of the conductor. SI unit of electric current is ampere. I 1 ampere, Q charge 1 coulomb, T time 1 second. So electric current is scalar quantity. So electric current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge flows through a conductor in 1 second. Force according to second law of motion, F is equal to this E electric field E is equal to F by Q. Electric field force per unit charge. चार्ज क्या है E इलेक्ट्रॉन. F is equal to EQ. Charge on electron is minus E. और according to second law of motion, F is equal to ma. A is equal to F by m. F के प्लेस पे माइनस E by m. Drift velocity is average velocity. Drifted electrons in a conductor in opposite direction of electric field. The drift velocity V D is equal to, or this you can see V is equal to U plus AT. एक U क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी. A is equal to V by T. A is equal to V by T. This you can say, or A is equal to V by T. From here, this in place of A we can put E by M, और tau T के प्लेस पे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम. और A mobility of electrons and mobility of holes. Now in this chapter you will study mobility of electrons. Mobility of electron mu is equal to Vt by E. Mobility of electron, mobility of current, drift velocity per unit electric field. और Vd के प्लेस पर we can put this value. E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E tau by M. और इलेक्ट्रिक करंट I is equal to N. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. I is equal to NEA VD. अब VD के प्लेस पर we can put here, in place of VD we can put this value. So E और E क्या होगा, NE square EA tau by M. From Ohm's law, that constant temperature, potential difference across conductor is directly proportional to the current. V is directly proportional to I. प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद R लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो V इज इक्वल टू IR. और यू हैव रेड ये रेसिस्टेंस R is directly proportional to L and R is inversely proportional to 1 by inversely proportional to A, एरिया ऑफ क्रॉस. दोनों कंबाइन करते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो. सो R is equal to रो L by A. रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी. कंडक्टिव सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो. जब कंडक्टिविटी मोर होगा तो रेसिस्टिविटी लेस होगा, लेस रेसिस्टिविटी होगा तो कंडक्टिविटी मोर होगा. और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी रो. सो अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 बाय रो 1 T2 माइनस T1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये रो 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. करंट डेंसिटी J इज वेक्टर क्वांटिटी. J इज इक्वल टू I बाय E. करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का वेक्टर क्वांटिटी. I के प्लेस पर we can put this value. I के प्लेस पर just you can put this value, so you will get I is equal to
ए विल बी कैंसिल, आई के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन ई वी डी। Now conductance of substance G is equal to 1 by R, reciprocal of resistance, और current density J, current density 1 by rho E, electric field, तो 1 by rho is equal to sigma, तो 1 by rho के प्लेस पे sigma, तो J is equal to sigma E, you can say. Temperature coefficient of resistance alpha is equal to R2 minus R1 by R1 T2 minus T1. R1 resistance of a conductor at temperature T1, R2 resistance of conductor at temperature T2. जब टेम्परेचर राइज होगा तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है. नाउ power of machine, power of an agent, P is equal to W by T. Power P is equal to W by T, W वर्क के प्लेस पे एनर्जी लिख सकते हो E by T, और P is equal to VI is equal to V square by R is equal to I square R. और हॉर्स पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, P is equal to H1 HP is equal to 746 watt. Horsepower, this you know, P is equal to W by T. पावर का यूनिट क्या है, वाट is equal to 1 joule by 1 second. Power of a machine is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. और अगर रेसिस्टर्स इन सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS is equal to R1 plus R2 plus R3, sum of resistances. Resistors are connected in parallel, then equivalent resistance 1 by RP is equivalent resistance, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. और ये 18I इलेक्ट्रिक करंट, R क्या है, स्मॉल r is the internal resistance of a cell, R क्या है, कैपिटल R resistance, external resistance. So I is equal to E this is EMF of the cell में क्या है, EMF है, I potential difference, और potential difference is the terminal potential difference when current is drawn from the cell. EMF is the potential difference of the two terminals of the cell when no current is drawn. So I is equal to EMF of the cell by R plus internal resistance. Ohm's law क्या होगा, V is equal to IR. I के प्लेस पर we can write I के प्लेस पर E by R plus R. So यहाँ पर ये R जो है इंटरनल रेसिस्टेंस, इसको लिख सकते हो R plus R is equal to ER by V. The R common we can take, R is internal resistance of cell, R is equal to E by V, EMF of the cell by potential difference minus 1 into R.